राइट यार, ये स्टार्ट ही हो जाए। नेट इतना स्लो चला है, साइट ही नहीं खोल रही यार। हट यार, इनका क्या ही चल रहा है। नेट तो आ रहा 5G का ही। API can't reach now, your connection is broken. अरे हमेशा ही होता है अगर वही चल जा। डिप 2 में करता हूँ एंटर, डिप 1 तो मुश्किल होएगा। Now we have to zoom the right. Let us see, और एक बार कोड विथ अनीश। The question says block given an array A of integers of size n. Array I or n. AI can be expressed as the sum of subset of A1s to array I minus 1. Okay. To j gas that aj to aj. A order A so that no position is blocked or report, that is impossible. Right. For example, really like reordering the array 3 to 5
2, 3, 5 make position 3 block. Since we can express 5 is equals to 2 plus 3, but if we reorder it to 3, 5, 2, so no position is blocked. If you could, it can input each test contain multiple test cases. Oh, for example, reorder the array 3 to 5, 2, 3, 5 make position 3 flow since we can express 5, 2 plus 3, but if we reorder it to 3, 5, 2, no position is blocked. So each test contains 5, 4, 1, 5, 9, 4, 1, 3, 3, 2, 3, 1, 2, 3. पहले का 5, 9, 1, दूसरे का आउटपुट 3. What like क्वेश्चन है एक एरे इंटीजर दे रखा है और साइज n, पोजीशन I से n तक ब्लॉक, राइट? If array I can be expressed as the sum of subset of array 1 to ai1, array ai minus 1, right? I ji j1 j2 jki to यहाँ तक है. So reorder is so that no position is blocked or report that is impossible. और ये बोल यानी कि impossible. लेकिन होएगा कैसे? Example 3 to 5, 2, 3, 5. 2 plus 3, but if we order to it 3, 5, 2, no position is blocked. So each test contains multiple test cases. Right. Hmm. First line of each test case is how can I do for like this? पहला तो यार इजी होता, इजी समझ नहीं आ रहा. यार ठीक है यार, integer size and we says that I to I blocked. So a array I can be expressed as the sum of set I to the there expressed, right? Array j1 and j2 jki array I minus 1. So that array j array j, for example 3 to 5
is equals to 235. Since we express 5 is equals to 2 plus 3. Okay. Test contains dual test cases. Like अगर ये टेस्ट है 4 3 2 1 3 2 3 उसमें कह रहा 3 1 2 है जो नो पोजीशन वो पोजीशन was not wrong since 3 can be expressed as the sum of subset of and position 2 is not wrong since 1 can't be expressed as a subset of 3 and position 3 is not wrong since 2 can't be expressed as sum of subset of 3. Okay. Hmm. So yaar we order A so that no position is blocked. Hmm. Hmm. No, I saw the position block about that is impossible. Hmm. Hmm. यार समझ नहीं आ रहा 3 2 5 है तो 2 3 5 reorder होगा and 5 is equals to 2 3 5 means here this will be the added this right अगर ये 1 5 6 है 3 3 6 so 5 minus oh, 3 3 6 minus 2 4 1 plus 2 is equals to 3 this last one is this is true but I have some question एक बार मैच का देख लेता हूँ क्या चल रहा है इनका दो गिर गए यार अरे can you access the subset अरे आई नहीं आई नहीं हो रहा तो बात ये है दूसरा एक और देखो एक और दूसरा देखो एक और समझ नहीं आ रहा ना दूसरा तो और मुश्किल लग रहा है लाइक क्वेश्चन दे रहा ओआई एक्सकर्शन Hector is on excursion with the Spanish Olympiad in
informatics visiting a corner, but he is desperate to sneak away to meet his friend Gustavo, Elsevier and Danny. To do so, he must cross a path graduated by and volunteers standing in a row, number from 1 to N, and ith in volunteer watches over position I, and each volunteer has an internal timer, right? Initially, at the second 0, the ith volunteer timer has a value array AI. Every second, all timer increases by 1 I. Once a timer reaches M, so it wraps around to 0, specifically at the second X. The ith volunteer timer shows the value array I plus X mod M. Right. This question is like each volunteer has an internal timer, second 0, and ith volunteer timer is a value array AI. And every second, all time increases by 1. And once a timer reaches M, it wraps around to 0. मतलब टाइम अगर रीच हो तो 0 हो जाए, especially at second X. And the ith volunteer timer shows the value of array I plus X, the modem, right? So ith volunteer is only watching over captain. Well, the timer is exactly over at any other point. They are distracted and they will know they will notice an actor, right? So actors start at position 0 to the left of all volunteer, and to escape must reach n plus 1 in the end of each second. And actor can be choose to stay in his current position, so move one position to the left or move one position to the right. Note that can't go left or to position 0, so actor is caught, and if only if at the beginning of a second he is at IN 08 volunteers. Okay, determine whether there is exist a strategy for actor to pass all volunteer and escape without being caught. So each chat contains multiple task cases. The first line contains the number of tasks T to T delta 4. Yeah, let's clear the input. 1 second. Right. I'm going to washroom. Okay, now I have to do. For output like पर अगर मैं इसका ना हेक्टर इज एन
एग्जीक्यूशन पे अगर मैं करूँ तो फिर मैं दूसरा अप्रोच लगाऊं। बात तो है सोचने वाली कि फिर मैं इसी पे ही करता हूँ तो दिक्कत हो जाएगी। हाँ यार दिक्कत तो हो जाएगी अगर मैं उस पर जाता हूँ तो मैं जाऊँ कैसे? अप्रोच में तो सोचना है कि आगे मैं उस तरह से कैसे जाऊँ। कि अगर मैं मतलब अगर मैं ये सोच लूँ कि मेरा अप्रोच सही है ना? तो मैं कैसे सोचूं इसका अप्रोच कि लाइक कि अब प्रॉब्लम का ही जाऊँ। प्रॉब्लम में ही जाऊँ मतलब कि और प्रॉब्लम में जाऊँ कि जैसे तो मैं ये है कि हर वॉलंटियर को जैसे हर वॉलंटियर के टाइमर को मतलब जैसे हर वॉलंटियर के टाइमर को मैं AI प्लस एक्स में कर दूँ, राइट? और एक्टर 0 से N+1 तक जाना ही सेफ है, राइट? और इम्पोर्टेंट ये है कि एट द एंड एट द एंड एक्टर स्टार्ट और सेकंड में पकड़ा जाएगा। और अगर वो पोजीशन आई पर है और एंड टाइमर इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, राइट? अगर एंड टाइमर इक्वल्स टू 0 हो जाएगा तो मैंने इसमें ऑब्जर्व करा हूँ कि यूज टाइमर होगा अगर अरे i+1 मॉड m हो जाए। और अगर किसी भी के लिए अरे i+1 मॉड m इक्वल्स टू 0 कर दिया, बट हेक्टर वेट भी कर सकता है ना? अगर लाइक एक्टर स्टार्ट पे कुछ सेकंड अगर वेट करवाऊँ मैं और अगर वो के सेकंड वेट कर रहे, सो यार लेट्स ओपन माय सबलाइम कोड। सबलाइम कहाँ गया? 1 सेकंड गाइस। और अगर मैं इसमें मतलब अब मेरा तो सिंपल है, हम यार कोड करके देखते हैं कि मतलब कि ये कोड लेते हैं as an कोड, राइट? अब तो सिंपल ही नेम स्पेस std 3 के
राइट। ये जो है स्टेडियम हम डालकर सिन सूटी हो जाएगा। राइट। लॉन्ग लॉन्ग लेते हैं क्योंकि बड़ा है ना, लॉन्ग लॉन्ग एम। अब ये कर दिया। वेक्टर लॉन्ग लॉन्ग, अब लूप ट्राई करते हैं। लाइक फोर int I equals to 0, I greater than n, I इंक्रीमेंट हो जाएगा। अरे आई का है राइट। अब मैंने इतना कर दिया। फिर इसके बाद हम क्या, सिन आई हो गया, एरे आई हो गया राइट। अब हम एक अनऑर्डर्ड सेट के बारे में सोचते हैं। लाइक अनऑर्डर्ड, अनऑर्डर्ड सेट में लॉन्ग लॉन्ग लेना पड़ेगा। तो अनऑर्डर्ड सेट लॉन्ग लॉन्ग st right, then we have to iterate like अगर वेल वाला जो एरे आई इक्वल्स टू आई प्लस आई प्लस वन डिवाइड बाई एम का जो सोचा था, क्योंकि आई प्लस वन बिकॉज वन बेस्ड में है। सो लाइक फोर int आई इक्वल्स टू जीरो, आई ग्रेटर देन आई इंक्रीमेंट राइट। अब इसमें वो लॉन्ग वैल्यू का लॉन्ग लॉन्ग वेल इक्वल्स टू ये कर दिया। सो एक बार देख लेता हूँ क्या है। आई प्लस वन राइट डिवाइड बाय एम हो जाएगा। अब ये तो हो गया। अब एक और लेना पड़ेगा ना कि लॉन्ग लॉन्ग बैड का। और इसमें एम माइनस वेल डिवाइड बाय एम हो जाएगा। अब इंसर्ट कर देते हैं डॉट इंसर्ट बैड। इफ अगर साइज में अगर साइज में अगर मैं साइज में करूँ तो कैसे होएगा कि लाइक साइज का करना तो पड़ेगा मेरे को, कि साइज का भी देखना पड़ेगा अगर लॉन्ग लॉन्ग है तो। सो लाइक लॉन्ग लॉन्ग st डॉट साइज equals to m right।
अदरवाइज यस हो जाएगा। राइट, anyone is here? Yeah, I mean you can copy the code and paste it, right? And this one is the like second answer. If otherwise it will success or they go for the time limit exceed, right? The other is says, right. So yeah, this was the code or the second question, right? What was the code? What was the question? This OA excursion, right? Now we go to the earlier question. We have to note down the first question, right? Like what was the first question? But it was like block वाला वैसे क्वेश्चन हुआ नहीं था कि मेरे को मतलब समझ नहीं आ रहा था. If you any guys knows like what was that, and I'm not thinking properly for the first question. If anyone knows that like मेरा मतलब अप्रोच ये है कि हमें एक एरे दिया है और रीऑर्डर करना है ना. अब कोई भी पोजीशन पर जो ये है, कहाँ गया एरे आई, कहाँ गया. तो मतलब सपोज करो ए आई है which is not equal to subset sum of previous element, राइट. तो वो मतलब हमें पहले के एलिमेंट्स का कोई सबसेट यूज करके एरे आई नहीं बनाना चाहिए, राइट. सो अब अगर मैं ये कहता हूँ कि ये मतलब एज पर द क्वेश्चन ही से, तो अगर हमें स्मॉल से बिग ऑर्डर मतलब सॉर्टेड इंक्रीजिंग में करना है, स्मॉल से बिग, तो अरेंज करेंगे. अब प्रॉब्लम क्या है कि ना, जो एग्जांपल है लाइक suppose we have to give 1 to 3, right? So 3 is equals to 1 plus 2, like he did in this 5 is equal to 2 plus 3, right? But my what I'm thinking like instead of largest element को पहले रखे, right? तो हमें मतलब एरे को डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर देते हैं. देन वी हैव टू गो टू द प्रिंट ऑप्शन, राइट. बिकॉज लाइक अब मतलब मेरा अप्रोच इसलिए काम करेगा लाइक बड़े नंबर्स को स्मॉल नंबर्स में बनाना मुश्किल होता है, और जब हम लार्जेस्ट को स्मॉलेस्ट चाहते हैं, तो हर एलिमेंट के पहले वाले एलिमेंट उससे बड़े या इक्वल होते हैं, तो उनका सबसेट सम उससे इक्वल नहीं बन सकता, राइट. और जो ये एज केसेस है, अगर अगर एरे में बहुत बहुत सारे 1s है तो प्रॉब्लम आ सकती है. अब स्पेशल केस या अगर सारे एलिमेंट सेम हो और एंड स्मॉलेस्ट इज इक्वल, सो एग्जांपल लाइक लेट्स से लाइक 1 1 1 4 1 आ गया, तो 1 इक्वल टू सबसेट ऑफ प्रीवियस वन, राइट. ये इजी है लेकिन समझ नहीं आ रहा था मेरे को. न्यू फाइल लेते हैं. एंड हो गया, राइट. सो नाउ वी हैव टू डू इज वेक्टर इंटीजर ए ले लेते हैं.
अबे यार, नहीं इंटीजर ही गया, इंटी ले लेते हैं यार, इसमें क्या है। राइट, अब फिर हम एक लूप में ट्राई करेंगे, लाइक फोर int I equals to 0, I and I increment, राइट। फिर हम sin का वही sin goes to array, now we have to like short, तो short के लिए sort a dot again, राइट, एंड के लिए एंड हो गया। अब हमें डिसेंडिंग ग्रेटर, सो int हो गया। So now we have to checking special cases, like check all special cases, like if a dot back equals to 1, right, so integer cnt equals to count a dot begin, if cnt then we will do like for integer x is a, then count हो जाएगा, काउट का तो x से ही हुआ, राइट। एंड now what we do, one second guys, count is like n, this was the first, this was the answer of the first question, right, code, then this was the second question of the code, right. So yes, this said these two questions are done. Let me do third question. Grid L. Question कह रहा Roger has P unit length segments and Q L-shaped pieces, each formed by joining two units length segment at a right angle. एक है यूनिट लेंथ सेगमेंट और एक है एल शेप्ड। ओके, अब यार he want to use all these pieces with no piece left unused. Okay, means he want all unused places, right. So question given P and Q determine whether they exist at as a positive m n and m n into m grid.
So M grid, right, for unit length segment and QL shaped pieces, possibly rotating them and provide valid N and M. So input is each test contain multiple test cases. The first line number of T 1 to T 100. The description of test cases follows. The first line of each test case contains two integers P and Q and 1 to P and Q into 10 to the power 8. Okay, and this was the examples or the input. तो क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास P है जो स्ट्रेट लाइन यूनिट सेगमेंट है, Q है जो L शेप्ड पीसेस है, ईच इक्वल्स टू 2 सेगमेंट्स एट 90 डिग्री। तो हमें N इंटू M ग्रिड बनाना है। ग्रिड में यार टोटल सेगमेंट कितने होते हैं? एक N इंटू N ग्रिड में हॉरिजॉन्टल अगर एडजस्ट करें तो N इंटू M माइनस वन और वर्टिकल में करें तो M इंटू N माइनस वन। बट टोटल एजेस कितने हो जाएंगे? लाइक दिस वाज द थर्ड प्रॉब्लम। सो टोटल तो हो जाएंगे प्लेन टेक्स्ट, right? Total is like M minus 1, right? Plus vertical M equals to N minus 1, right? Equals to 2 NM minus N minus M. अब तो ये टोटल सेगमेंट्स हो गए जो अवेलेबल है, राइट? अब स्टेट पीसीस का लेट कर देते हैं हम M को, और हर L पीसीस में इक्वल्स 2 सेगमेंट है, total 2Q, right? So total segment available is P plus 2Q. So ग्रिड बनाने के लिए ना हमें ये जो 2NM माइनस N माइनस M है ना इक्वल्स टू P प्लस 2Q हो जाएगा, राइट? अब ये तो आगे समझने को कि टोटल P प्लस 2Q हो जाएगा। अब ये इक्वेशन बने 2NM माइनस N माइनस M P प्लस 2Q, राइट? अगर हम ऐड करें बोथ द साइड, so what was equation 2n minus 1, एक सेकेंड, क्या 2n, अब 2n minus 1 हो गया, राइट? ये ब्रैकेट में, एंड देन अदर ब्रैकेट, सो 2m minus 1 इक्वल्स टू 2 है। अब 2 से 2p प्लस 2q हो जाएगा, राइट? इधर हो जाएगा प्लस 1, यहाँ ऐड कर दिया दोनों में, राइट? सो फाइनल साइड क्या हो, फाइनल साइड का भी लेट लाइक x इक्वल्स टू p प्लस 2q प्लस 1, है ना? p प्लस 2q प्लस 1 ही तो होगी। अब मैं इसको कोड करने जाऊँ, so let me copy this.
वाइल्ड टी तो हो गया। अब लॉन्ग लॉन्ग पी और क्यू ले लिया। सेंड कर देते हैं पी। वो इक्वेशन डाल देते हैं लॉन्ग लॉन्ग x equals to 2 into p plus 2 into q, right? Equals to false. Now like I equals to 1 into all to x increment लॉन्ग लॉन्ग ये कर देते हैं y b x divided by, and now like if both are odd automatically, अगर like if we have to do अरे like अगर मैं n में करता हूँ so a plus 1 divided by 2 और इसका m कर देता हूँ so इसका तो हो जाएगा b 1 divided by 2, right? if मेरा अगर n equals to 1 हो गया, राइट? ट्रू। So if we have to like -1 Ooh. Now this was the of the third, right? Third question. What we have done, we have to equation what we earlier done in the comments. We have to use a equation of both the question, right? And then we have to boolean, right? or otherwise found is equals to 2 ही आएगा। इतना तो होएगा नहीं इसका कि found true ना आए,
ट्रू ही होना चाहिए. Let you do the fourth question. Oh, let's discuss the fourth question. Fourth question is like difference between the easy version. Yeah, there is a secret. The secret array of length a, array a of length 2n plus 1, whose elements are integers from 1 to n. Right. 1 to each value integers are 1 to n and each value appears exactly twice except from 1. Each appears exactly 3. So like our goal is to find the 3 position of the value appears 3 times. To do this you may ask the following query 66 times. 66 times. Okay. Choose an integer k and array s of k distinct indices between 1 and 2 and plus 1. You will receive the number. You will receive the number things value on it appears exactly once. In other words, the count values that are not. Hmm. I mean, how can we do like choose an integer k, an array of k of distinct indices 1 and 2 and plus 1. A 3 S1 S2 to Sk that appear exactly once. In other words, the count of values that are not repeated. But मुश्किल तो लग रहा है यार ये ऑप्शन कि करना कैसे. For example, if values a s1 to 2 1 2 3 3 3 2 3 6 7, and so the query will be value, in other words the count of values that are not.
यार हो जाएगा कैसे भाई। हम्म, 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 यार ये तो समझ नहीं आ रहा। Let's leave it